I'm a Python developer and data scientist as well, and I'm also into backend development. Through this channel, I want to contribute on how I'll think about artificial intelligence, data science, and machine learning. On this channel, I'll be sharing my learnings about Python and some short of backend development. So let's start with basics as we do in C or C++. तो जैसे कि कंसोल बेस्ड प्रिंट जो हम आउटपुट जो डिस्प्ले करवाते हैं लाइक कंसोल बेस्ड, तो वो बेसिकली सी और सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ या स्टैंडर्ड आउट वगैरह यूज़ करते हैं. इन जावा वी बेसिकली यूज सिस्टम डॉट आउट एंड समथिंग लाइक दैट. सो पाइथन मेक इट वेरी इजी फॉर अस. लाइक अगर तुम ये छोटे बच्चे को भी दिखाओगे लाइक 7-8 क्लास वाले, तो उन्हें भी पता चल जाए कि यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं प्रकाश करके. सो सिंपल है. लाइक प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर जो भी हमें डिस्प्ले करवाना है कंसोल में वो डाल दो, तो यू कैन सी इजीली प्रिंटेबल है. तो इससे यहाँ पे हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ नहीं करना पड़ता है. लाइक इन सी प्लस प्लस सॉरी इन सी जो हम लोग यूज़ करते हैं %d%f लाइक, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट है, irrespective of that format specifier, right? So we can directly give him integer, print it for us, and it will print. Same for float values. There's nothing to do. So like, same for boolean. And the best part is it is more flexible. Like we can print a string, uh, integer, a boolean number. So it is very flexible. Like this print function is very flexible. And if you want to print all the strings like this, so it's very flexible, right? You can print it very easily. But you can see that there is by default space between all these names, right? एक स्पेस है हर एक नेम के बीच में. सो ये बेसिकली एक ऑप्शन होता है लाइक सेपरेट इज इक्वल्स टू स्पेस. तो मेनली इसी के वजह से बाय डिफ़ॉल्ट यही फंक्शन इसके अंदर इंस्टॉल रहता है. बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम प्रिंट यूज़ करें तो ये हमारे अंदर स्पेसिफाइड रहता है. तो अगर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे सेपरेट करके यहाँ पे जो भी देना हो, लाइक यहाँ पे मैंने मान लो दिया स्लैश like RR दिया, तो यू कैन सी प्रकाश RR, प्रियांश RR, समथिंग ऐसा होता है. सो इट्स लाइक दैट. And see, you can see if I have not mentioned space, so it will not give any space there. And similarly so one thing I have to mention that I have मैंने यहाँ पे एक print यूज़ किया, देन उसके जस्ट नीचे प्रिंट. मुझे सेम लाइन में तो नहीं आया ये लाइक, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके नीचे हमारा ये यूज़ होता है. हम मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इस प्रिंट फंक्शन में एंड एक ऑप्शन है. लाइक ऑप्शन बोले तो लाइक एक इनबिल्ट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही है, इनबिल्ट ऑप्शन है जो कि इस तरह से स्पेसिफाइड है कि जब भी प्रिंट यूज़ हो तो एंड नीचे ही प्रिंट हो, मतलब वो नेक्स्ट लाइन में ही नेक्स्ट प्रिंट यूज़ हो. अगर हम इसको चाहे तो एज ए स्पेस चेंज करके सेम स्पेस के बाद प्रकाश है. सो इट्स नॉट रॉकेट साइंस आई थिंक. सो द सेम थिंग आई हैव मेंशन्ड हियर लाइक. सो let's come to the next part. Like what are I hope you guys have understood the print function. It's not so big. Like how can we print anything using Python? Many language have many things to print out, as I have mentioned. हम ज़्यादा कुछ नहीं, हमको ज़्यादा यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ रहा है. एनी डेटा टाइप कैन बी प्रिंटेड यूजिंग पाइथन. सो एक बार में एक से ज़्यादा चीज़ प्रिंट कर सकते हो, लाइक दिखाया जो मैंने. Python is intelligent enough to understand that what you want to print different data types. This print function is very flexible. So let's come to the data type. Python supports 3 categories of data type. First one is basic type. इसमें बहुत सारे से तुम अवेयर हो गए ऑलरेडी, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन एंड स्ट्रिंग. एंड अदर वन इज कंटेनर टाइप. इट इज़ मोर लाइक अरे, बट इन सभी के बीच में थोड़े थोड़े डिफरेंस है. लाइक लिस्ट में, टिप टपल्स में बहुत थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंसेस है, जिस वजह से इनके यूज़ अलग अलग होते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ यूज़र डिफाइंड टाइप्स. इट इज़ मोर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग.
we will learn further. So starting with basic types, type consists numbers like number like integers and float. तो पाइथन में बेसिकली इस तरह से स्टोर करते हैं वेरिएबल में इंटीजर्स को, एंड देन टाइप इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करके हम उसके वेरिएबल टाइप को देख सकते हैं। लाइक हेयर हमने चेक किया तो लाइक एक्स जो हमने असाइन किया है वो इंटीजर टाइप है। अगर इसको चेंज करें लाइक दिस, तो यू कैन सी लाइक इट्स फ्लोट, राइट? So these are the story of integer and float in Python. And then we can perform operations with these variables like this. You can see here, we can easily perform operations. Not a big deal. हाँ, one more thing, if you want कि ये पार्ट जो है हमारा फ्रैक्शन में जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है वो अगर इंटीजर में आए तो हम इसे डबल स्लैश देते हैं, ऐसे कर सकते हैं। फाइन, या सो ये था हमारा इंटीजर एंड फ्लोट, एंड देन कम टू the same thing here. We can increment in Python. We increment like this, but in C++ or C we use this type. So it's kind of difference here. And then come to this part. Suppose we have assigned T as true and F as false. So type of T will be bool. You can see here. Then we will use logical and T is true and F is false. Then obviously if we use logical and, it will give us false, right? And if again we will use logical or, it will give us true. It's simple, right? And then not T will be, T is already true, then it will be false. And T is not equal to F, that is false. Obviously true, right? T is not equal to F. तो पाइथन में स्टोर कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे तुम देख सकते हो लाइक पाइथन में 89 तो प्रिंट हो गया। क्या 89 इंटू 89 का पावर 89 हो सकता है क्या? हाँ, ये भी हो जाता है। लाइक फिर चेक करते हैं थोड़ा और बढ़ा के। हाँ, ये भी पॉसिबल है। फिर और थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। हाँ, ये भी पॉसिबल है। तो क्या कुछ इसका लाइक कुछ लिमिटेशंस है या नहीं है? तो वही देखो यहाँ पे मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया था तो पता चला मुझे लाइक 18308 तक तो इजीली हो सकता है। उसके बाद लाइक अभी दिखाता हूँ एक मिनट। हाँ, उसके बाद हमें इनफाइनाइट शो करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो एक इंटीजर पाइथन में शो कर सकता है वो 18308 है। मे बी वन ऐड करो, दो जो भी करो, वो छोटा नंबर है, बट वन का पावर 308 है ये। सो क्या कहते हैं लाइक it's it is the last, it is the maximum value after and minimum value, इसके बाद 18308 था मिनिमम वैल्यू, इसके बाद हमें इनफाइनाइट शो करेगा। So basically हाँ, same case with float, you can see here. And another data type is boolean. We all are familiar with it. Here Python provides the extra feature of complex number. So if you will like store any value like this, पता ही है लाइक कि जे वाला पार्ट हमारा रियल नंबर का पार्ट होता है, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है। सो अगर हम इसको देखें टाइप ऑफ एक्स चेक करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स आ है। तो पाइथन का ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन पाइथन में स्ट्रिंग को दिखाने का सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोटेशन भी यूज़ करते हैं, ट्रिपल कोटेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम फाइन। तो कंटेनर टाइप में बेसिकली हम फर्स्ट वहाँ स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। तो इन लिस्ट क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज असाइन करो। इट इज़ मोर लाइक अरे, राइट? मोर लाइक अरे। तो प्रिंट किया लिस्ट को यहाँ पे, तो यू कैन सी, एंड उसके एक पर्टिकुलर इंडेक्स को भी फैच कर सकते हैं, फाइन। One feature of list is that it is mutable. We can change we can use their index and directly change the value. It's mutable.
You can see here if I will you can see that at zeroth index I have assigned as a assigned it as 10. So you can see here. Then come to tuple. We create tuple with small brackets, and you can see here yeah, we have printed tuple, and we can also fetch tuple. It is more like list, but there is a difference. Uh, you will get to know in next line. Huh? So tuples are immutable. Lists are mutable. I hope you guys got the point, what the main difference between list and tuple. It's Tuples are 11 immutable. o'clock. If we will assign zeroth index with 10, then it will show error that tuple object does not support Python. Right? So this is a difference between tuple and list. And then come to set. Sets. Uh, Set is created with curly braces. The main purpose we use set is it reduce the redundancy like duplicates value को ये हमें redund मतलब जो वैल्यू ऑलरेडी बार बार आते हैं उनको वो रिड्यूस करवा देता है यहाँ पे 5 हो गया या फिर 4 हो गया तो ये हमें यूनियन देता है लाइक इस टाइप का समझो तो हमें रिड्यूस करवाता है ये डुप्लीकेट्स. Then the last one is dictionary. Dictionary is a container type where we use key value pairs. So for this dictionary, if we check with name, it will give us Prakash. If we check with age, it will give 20 age, like that. So if we print our dictionary, then you will see that this is our dictionary. So if we use this key to fetch the data, key and value, this is key and this is the value. If we fetch the value with this key, we will get Prakash. Let me clear this. Let me implement it. हाँ so now you can see then we with this key name, इस key name से हम प्रकाश को fetch कर रहे हैं. इसी तरह से age से हम उस value को fetch कर रहे हैं. तो ये है हमारा container type. First one is list, second one is tuple, and third one is sets and dictionary. इन सब के बारे में like हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे आगे. तो अभी के लिए बस बेसिक यही इन्फो है. लाइक लिस्ट इज मोर लाइक अरे एंड लिस्ट एंड टपल के बीच में डिफरेंस है कि टपल सारी म्यूटेबल, लिस्ट आर म्यूटेबल एंड we create list with square brackets and we create tuple with small brackets and that reduce करता है redundancy को. लाइक लिख लेता हूँ मैं reduce redundancy and tuples are dictionary are the key value pair. Key value pair. Variable are container for future use. We can take an example like अगर मुझे कभी लॉग इन करना हो तो यूज़र नेम में नेम डालूंगा, पासवर्ड वाले स्लॉट में पासवर्ड डालूंगा, तो बैकएंड में कहीं वो एज अ वेरिएबल रहता है तो हम उसमें अपना नेम या पासवर्ड डाल के ऑथराइज करवाते हैं लाइक दैट. तो वेरिएबल सिंपली वेरिएबल्स आर द कंटेनर वेयर वी स्टोर आवर डेटा. It can be of any type like integer, float, whatever. So you can see here in in C language or C++, we declare data types here, then we assign uh, value to this a variable. But Python make it very simple, very easy. Like we can directly put the variable and assign like this, so we can print and it is easy to print, right? Same for this. And the main thing behind is no variable declaration. In Python we do not have to declare variables, right? That it is of this integer type or it is of this float type. We do not have to declare anything like this. Okay, because Python come up with the these two concepts like dynamic typing and dynamic binding. Like we will discuss it here.
here only, like what is dynamic typing. We don't have to assign data type before we declare. We Again we will read this, like we don't have to assign data type before we declare. Like here we have declared the data type, so here in Python we do not have to do anything like this. And another one is dynamic binding. One variable can store multiple data type, right? So if we assign name as Prakash and we will run it, then again we will change it to integer type, और फिर अगर हम इसे फ्लोट में बदलें, फिर उसे बुलियन में डालें, तो कुछ भी कर लो, लाइक कोई भी तुम डेटा टाइप यूज़ कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही है डायनेमिक बाइंडिंग। एंड स्टैटिक टाइपिंग एंड स्टैटिक बाइंडिंग आर वाइस वर्सा ऑफ all of them, whatever they are. And there is a special syntax to assign variable in Python is this, like a is equals to 5 semicolon, b is equals to 6. So the special syntax. And the another one is like this, a b c 4 5 6, right? And one more is here, a is equals to b is equals to 6, right? So these are the special syntax. Till here we have covered variable, data type, and print function. And Python come up with some keywords. As we all know, Python is a case sensitive programming language, but not more like C and C++. It is very easy and very easy to use. In programming, a keyword is a word that is reserved by a program. Then Python have come up with many keywords. The reserved word, like we use in Python printf, for while, like this. The Python also come up with some keyword. You can use this library to view the keyword list. You can see here, these are the main keywords that Python use: false, none, true, as, sync, wait, like this. And the identifier. A Python identifier is a name used to identify a variable, function, class, module, or object. It's very simple. And rules for setting identifiers, like when we create a variable, can only start with an alphabet or underscore, right? Like this. It's acceptable. Followed by zero or more letter and digits. ठीक है? You can use any number followed by this alphabet, or you can use this like this. And keyword cannot be used, like the false one. With is a keyword if we use invalid syntax, right? Or the second one is clear, right? Keyword is fine. And we cannot start variable naming with number. So it's same as C and C++. There's nothing more. Then it's all. So till now we have learned basics of Python, including print function and many functionalities of print function, variables, different data types that we use in Python, and techniques of dynamic and static binding and typing. And in upcoming videos we will further explore Python. So guys, stay tuned and good night for now.